असा के परेशान कयो तो असा न तारी सकूं इन मासूम बचड़न के इन हाल में खुदा रा एकड़ो कम कयो ता एकड़ो कम कयो मां हुक्मरानन के गुजारिश कया तो ता टेंट न खणी अचो ता राशन न खणी अचो खुदा रा गोलियूं खणी अचो बंदूक खणी अचो असा के हणो असा दे बचड़न के हणो खणी अचो असा के मारियो एकड़ो ही दफो जान चढ़ायो असा जी छो असा के परेशान कयो तो असा न तारी सकूं इन मासूम बचड़न के इन हाल में अचो मारियो बंदूक बि त आहिनि पुलिस वारनि वटि हलाइनि छो नथा हलाइनि ख़तम कनि हिननि सभिनी खे हे मासूम बचड़ा रोइनि था ख़तम कयो हिननि खे मूं समेत सभिनी खे गोलियूं हणी तबाह कयो कबरूं खोटियूं था असां पंहिंजो हींअर जो हींअर मारियो असांखे जे नथा छॾियो तहफ़ुज़ नथा ॾियो शेल्टर नथा ॾियो त मारियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान भट्टो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे एक इल्तमास है कि मेहरबानी करके आप मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यह आपका बहुत एहसान होगा। कमेंट्स में आप मेरी रहनुमाई करें, मैं इसको और ज़्यादा कैसे अच्छा कर सकता हूँ, किस तरह इसको ज़्यादा जो है वो अच्छा किया जा सकता है, किस तरह ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किया जा सकता है, और वो आपकी मेहरबानी होगी। और जो दोस्त गालम गलोच कर रहे हैं उनकी भी मेहरबानी। मैं गालम गलोच हमारे लिए एजाज़ है और हमें खुशी होती है जब आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो खैर नाज़रीन, कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है उनका दिल बहुत हसास होता है, बहुत नाजुक होता है, क्योंकि उनका दिल दर्द से भरा होता है। लेकिन एक ऐसा आर्टिस्ट कि जिसके चचा को बहुत इनके बचपने में इनके चचा को जहर देकर मार दिया गया हो, जिनके दादा को बेगुनाह उनका जुडिशल मर्डर किया गया हो, जिनकी फुफ्फी को रावलपिंडी में लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया हो, जिनके बाप को यानी जिनके वालिद साहब को घर से थोड़े से ही फासले पर गोलियों के से छलनी कर दिया गया हो, तो उस शख्स, उस आर्टिस्ट के दिल में क्या होगा, कितना दर्द होगा, कितनी अजियत होगी, कितनी तकलीफ होगी। तो वो अपने तकलीफ को, अपनी उन अजियतों को कैसे बाहर निकाले। ऐसे लोग बहुत नाजुक होते हैं। मैं ज़ुल्फकार जूनियर की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुल्फकार अली भुट्टो है। मैं आर्टिस्ट हूँ, विजुअल आर्टिस्ट हूँ और मैं अमेरिका में रहता हूँ। My father was killed, my grandfather was killed, my uncle was killed, my aunt was killed. All very brave people and people who I love dearly and I admire their sacrifices. But why is there this expectation of shahadat? Growing up in Pakistan, from the family that I'm from, obviously there is a need to stay safe and there is a need to think in a way in which you not only keep yourself safe, you keep the people around you safe. When someone is on a mission to prove that they're not scared and they're willing to risk their own lives, then don't risk somebody else's. This is the problem with Pakistani dynastic politics or the Pakistani political elite, is that not only are they saying, I'm willing to die, but I'm willing to make all of you die with me. That's not what I want. And so, which is why I chose art as my political voice. I'm an artist who has a political practice. I don't consider myself an activist, but I'm an artist whose work is political. So it's more liberating for me. And I think, it's a better service, perhaps. I think अगर हम queer identity के बारे में बात करेंगे, हर individual के लिए इनकी अलग कहानी है. Queer is a politics. Muslims are people, and people are queer. Sometimes it's as simple as that. The world has made us feel like the two can't coexist, but they can, right? And I think what my work tries to do is expand what queerness means, to expand what it means to be Muslim, to expand what it means to be Asian, to expand what it means to be Arab and Pakistani. I was raised
to believe very much that I was Sindhi, you know, a Sindhi Pakistani. My father, Mir Murtaza Bhutto, he would always tell us कि आप सिंधी हैं और सिंधी की ज़ुबान सीखना है और सिंधी कपड़े पहनना है और सिंधी कल्चर आपको लर्न करना है. My inspiration is the shrine, the Sufi shrine. My inspiration is Islam, but also the cultures that Islam has come into contact with. So my fabric work, my rallis, right? I call them ralli, which is quite a Sindhi thing. But also they're used to mimic alams. They are constructed to reflect the beauty and the color and the flowers and the opulence that makes us who we are as Asians. I started out as a drag queen, and I think it provided me with so much. It was very generous as a medium because you could experiment so much. You know, I don't consider myself a drag queen anymore. This is my current reality. I'm a performance artist. I use drag as a performance artist. फालूदा इस्लाम क्या है? कौन है क्या है? I think ये जवाब मेरे लिए मुश्किल है. फालूदा इस्लाम was meant to be an art project, not an identity. She's my alter ego, my performance alter ego. In her live performance practice, she's not alive, she's dead, she's a zombie. वो जिंदा लाश है. और वो जिंदा लाश इसलिए है क्योंकि she questions our obsession with shahadat, with martyrdom. Right? This constant expectation by people of a certain type of person to be a shaheed, right? This constant expectation that we have to give our lives. We must give our lives to the cause. I don't want to fight on behalf of anybody. Pakistanis should and can fight for themselves. They don't need a political legacy to stand in and speak for them. Pakistan is greater than that. ذوالفقار بھٹو جونیئر, میں ان کو بہت جب چھوٹا سا تھا اور میں میر مرزا بھٹو کے ساتھ میری بہت زیادہ قربت تھی, تو ان سے بچپن میں ان سے ملاقات ہوتی تھی, یا جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی تھی, یا بی بی فاطمہ سے بھی ملاقات ہوتی تھی. فاطمہ بھٹو نے تو اپنے جو اندر کا جو درد تھا ان کو تحریروں میں ڈھالنے کا ہنر سیکھ لیا. Fatima Bhutto, the center of attraction at the 4th edition of the Kovalam Literary Festival in Thiruvananthapuram. Her message: encourage more people-to-people contact between India and Pakistan. We used to have free movement. You used to be able to travel between India and Pakistan without a passport, until the 50s. We need to go back to being able to talk to each other more openly. So what's next for the 29-year-old author of the acclaimed work Songs of Blood and Sword? It will be prose or poetry or... It will be prose. It will be again about Pakistan, but not about my stories this time. ہم ذوالفقار بھٹو جونیئر نے اپنے جو اندر کی جو کیفیتیں ہیں ان کو فن کے ذریعے دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی. ابھی سیلاب کے دن چل رہے ہیں اور ان سیلاب کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان جس نے اپنی شلوار گھٹنوں تک رکھی ہوئی ہے اور وہ عام دیہاتیوں سے, عام گاؤں والوں سے یا سیلاب متاثرین سے پانی میں, کیچڑ میں ننگے پاؤں ان کے ساتھ گھوم رہا ہے, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ کچھ دے نہیں پا رہا کیونکہ وہ کچھ دینے کے قابل نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں دیکھیں ہم کسی کی میت میں کیوں جاتے ہیں یا ہم کسی کے لیے تعزیت کرنے کیوں جاتے ہیں. ہماری تعزیت کرنے سے یا ہمارے ان کے گھر میں چلے جانے سے کوئی مردے زندہ نہیں ہو جاتے, وہ واپس نہیں آ جاتے, لیکن ہم ان کا دکھ ضرور بانٹ سکتے ہیں, ہم ان کی تکلیف کو بانٹنے کا ایک ذریعہ ضرور بن سکتے ہیں. تو ناظرین, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر آج وہی ذریعہ بنے ہوئے ہیں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو 70 کی دہائی میں جو ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا
उसमें कहाँ कहाँ वो नहीं गए। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो बिल्कुल उसी की तरह मैंने देखा ज़ुल्फ़कार जूनियर को। जावेद साहब का भाई। अच्छा, जावेद मेहर साहब का भाई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उसका भाई छोटा। मैंने सुना कि आपके गांव में भी बहुत नुकसान है। आगे खड़ी जो रख रहा था, हेलो मिशन रख रहा है। वो मिशन में कदों उधर डरा जाए। असांखे फिर शहर में पानी अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल सेम तरीकाकार, सेम अंदाज, सेम तरीके से लोगों से मिलना, उसी तरीके से लोगों में जाके घुल मिल जाना बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है वो अपना काम खुद करने की सलाहियत रखते हैं। मैंने उनको बर्तन मांजते भी देखा है। मैंने उनको दीवारों पे पेंटिंग्स करते भी देखा है। मैंने उनको मगरिब में शाहराहों पर रक्स करते भी देखा है। मैंने उन्हें शाहराहों पर नमाज अदा करते भी देखा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मुस्लिम नॉट अ टेररिस्ट। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर की जो शनाख्त है वो एक आर्टिस्ट की है। ऐसा आर्टिस्ट कि जिसके दिल में अपने लोगों के हवाले से दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है। वो उनकी तकलीफ़ को अपने अंदर में महसूस करता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट खुद इतने बड़े तूफ़ानों से गुजर के आया है कि जैसा मैंने आपको बता दिया कि उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। नाज़रीन, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ने ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर ने गुज़िश्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब में जो है वो फैसल, ऐदही और दीगर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। हमारे मुल्क में एक इंकलाब आने वाली है। लोग बहुत नाराज हैं। लोग इसी वडेरे सिस्टम के साथ फेड अप हैं। लोग ये नहीं चाहते हैं, फ्यूडलिज्म, सरमायादार, ये चीजें नहीं चाहते हैं। We need radical reforms, but our politicians will not give us radical reforms because we have spent the last 75 years dancing between feudalism and capitalism. There is no space for social reform. Yes, in terms of the lands that we have, तकरीबन सारे तो डूब चुके हैं और हमारे हारी के घर भी गिरे हुए हैं। नाज़रीन, इससे कबल ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर ने जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुख्तलिफ जगहों पर गए, मुख्तलिफ जगहों पर उनका सहाफ़ियों से सामना हुआ। मेरा सियासत आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जितने भी मेहनत है, जितने भी मेरे पास हिम्मत है, मैं फ्लड रिलीफ में डालूँगा। फ़िलहाल मेरे कोई इरादा नहीं है सियासत में के आने में, मगर लोगों के मदद देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जो डेवस्टेशन जो हुई है, जो तबाह हुई है, वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी स्केल इतनी बड़ी है कि हम अपने बड़े से भी पूछते हैं, जो 80 साल उम्र के लोग हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि अगर उन्होंने कभी ऐसे देखे हैं सैलाब, और वो सब कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है इनकी लाइफ में जो दैट दे हैव सीन सच अ फ्लड। और हमारा हुकूमत ऑलरेडी इज़ ऑलरेडी इन एन इकोनॉमिकली वीक पोजीशन। So at this point it's become every person, every village, every community for themselves.
And this is a time for us as Pakistanis to rebuild our country. We have to literally rebuild our country. कोई private entities नहीं है, कोई government entities नहीं है फिलहाल, मगर लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर लेवल पे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे फैसल ईदी साहब कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपर्ट्स यहाँ पे वो कैसर बंगाली है, सब कोशिश कर रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल में क्या क्या करना है। हम तो अब बस आर्टिस्ट हैं, खाली आर्टिस्ट हैं, टेक्सटाइल आर्टिस्ट हैं, और हमारे हाथ हैं, तो जो भी हम कर सकते हैं हम करें। सहाफ़ियों ने उनसे कई सवाल किए। एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप सियासत में कब आएंगे, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि सियासत में मेरा काम नहीं है, मैं आर्टिस्ट हूँ। इस वक्त अवाम के अपने मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। इस वक्त जो सूरत हाल सिंध में है, जिस तरह सिंध तबाह हो चुका है, इस सिंध को ही नहीं पूरे मुल्क की तामीर नो का सवाल है। और उन्होंने इस वक्त के मुल्क के मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत खुल के की कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है, ऐसी सूरत हाल में आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए, आलमी बिरादरी को हाथ बटाना चाहिए, आलमी बिरादरी को मामलात को देखने चाहिए। और उन्होंने हुकूमत से भी दरख्वास्त की, उन्होंने NGOs की, बिलखुसूस फैसल ईदी की, कैसर बंगाली साहब की, मतलब जिस तरह ये कर रहे हैं, या JDC के जो अब्बास साहब हैं, जिस तरह ये लोग इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं, ये नाक़ाबिल फरामोश है। जो कुछ हो रहा है इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसको तारीख कभी नहीं भुलाएगी। जिन भूखों को खाना पहुंचाया गया वो कभी नहीं भुलाएंगे, जिनको उनके घरों पे जाके, यानी टूटे हुए घरों पे जाके टेंट्स दिए गए, वो उनको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कहा ना कि आप किसी को दे कुछ नहीं सकते, लेकिन उनका दुख बांट सकते हैं, उनका दर्द बांट सकते हैं, जिस तरह ज़ुल्फ़कार जूनियर कर रहे हैं। बहरहाल ज़ुल्फ़कार जूनियर बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एक फ़कीर इंसान है, और वो सियासत से बहुत नाला हैं, और सियासत उनको करना नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दौर की जो सियासत है उसमें जितनी मुनाफ़क़त है, जूनियर में इतनी मुनाफ़क़त नहीं है। और जूनियर जिन हादसात, जिन वाक़यात से गुज़र कर आए हैं, तो ऐसा शख्स कभी सियासत नहीं कर सकता। अगर सियासत करते हैं तो फिर या ये मैदान में आए या फातिमा भुट्टो साहबा मैदान में आए, तो फिर नारा एक ही लगेगा कि भुट्टो का वारिस भुट्टो है। Saint after saint, guru after guru yearn to be one of God's many lovers, dreaming of lying on a bed, awaiting an incomprehensible being. Do not imagine what they look like. That would be sin. Instead, imagine an overwhelming feeling of desire, churned with a love that only our Creator could have for us. Breathe in Rahman, breathe out Rahim, over and over again, till your body is ready to receive the sighs of your deliverance. Lam yalad wa lam yulad, Allahu laysa umaka ubaka, Allahu huwa al-ashiq. الأرض فهي الأم والأبو والأخو والأخت وكاتمة الأسرار والمعشوقة نتائك عليها عند الحاجة فهي الرحم موجودة تحت أقدامنا وفي بطننا. ما هي تطلب منا يا ترى؟ وماذا يحتوي عقد زواجنا؟ زواج اللحم البشري مع التراب. Do not imagine God as the father, as the mother. God is the very essence of the lover. But the earth is mother, father, sibling, confidant, and lover. We lean on her. We rest on her. She is the womb. She lies beneath our feet and in our bellies. What does the earth ask of us?
What lies in the marriage contract between flesh and soil? In a world where the sound of air raids is as common as the call to prayer, where the disappear outnumber those of us accounted for, and demons are celebrated as heroes, and heroes mocked for their bravery, where nations are divided by arms folded or hanging loose, and bullet holes become a crown on a martyr's skull. When the leaders of yore, tall like mountains, are toppled, blown to the ground like a tower of cotton balls, and those that survive simply betray you. Where stones, sticks, bricks, and carved marble containing generations of stories instead become the rubble that paves the road to Damascus. When we have become so sure of our impending downfall that we watch as a people lusting for colonization destroy our neighbor's home and use its people as target practice. When ISIS becomes the name of a mysterious horde of lost souls and not the name of a great goddess. And when an imperialist force mistakes its occupation as liberation and human beings are called collateral damage. It is only then that you realize that those you have always looked up to and the systems you have trusted so deeply have failed you. It is time for Gog and Magog to emerge from the desert so we may meet them and plot our revolution. It is time for modern civilization to crumble as it was always destined to, so we may rise from its ashes. It is time for us to evolve into monsters unseen, since humanity has proven itself arrogant. It is time to flip the Dome of the Rock upside down, so we may use it as a satellite to contact alien life. Surely they have the answers. It is time to look beyond the illusions of a long-gone world and create realities unheard of. It is time for the earth to open and release its children so dead martyrs may rise and fight alongside the living. It is time for us. It is time for us to inherit the earth. My question. What if all those killed during the War on Terror were resurrected with a specific purpose on taking revenge? Thank you so much, YBCA 100. इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।